on this earth, and you assume if they had phospholipids, how these part of these phospholipids are hydrolyzed, phosphate is released, which can be used for other cellular reactions, and the phospholipid loss is compensated by the simultaneous biosynthesis of galactolipids. So cell functions are maintained without using phosphorus. So this is the key for their survival under phosphate deficient condition. And this, there are a couple of other biochemical changes. They together we call them as a membrane lipid remodeling. So this is a very adaptive response in many legumes and many plants which are highly tolerant to phosphate deficiency. So we ask the question, what is the situation in a fast-growing plant like rice? So here is the lipidome profiling of rice. The blue bar is galactolipid. On the my left, these are the different rice genotypes. They are grown under sufficient phosphate condition. So what you see, the galactolipid is about 70% in sufficient phosphate condition, while the phospholipid is about 30%. But when you grow the same genotypes in phosphate deficient condition, the galactolipid level has increased up to 90%, and the phospholipid level has gone down to 10%, less than 10%. So what is this data is telling me? This data is telling me that like other plants, rice also use membrane lipid remodeling. That means it takes phosphate out of the membrane lipids to survive phosphate conditions. Yeah, next. So we have characterized several genes of this pathway. For example, this is the glyphosphodiester phosphodiesterase, GDPD. It recycles the phospholipid to release the phosphate and the other lipids. Next slide, please. So this gene is highly expressed when plant need them. They are suppressed when plants do not need them. So this gene is induced when plant faces the phosphate deficiency. And cutting a very long story short, when we overexpress this gene in rice, the rice plants, they not only show the root length, but they also show higher phosphate content. So they also have more galactolipids. So two mechanisms are working here. One is that lipid is compensated, phospholipid by galactolipids, which are phosphate-free lipids, and we have change in root architecture so that plants can absorb more phosphorus. Next slide, please. Recently, we have characterized another gene, MGD3. This gene is a chloroplast localized protein, and it is involved in the synthesis of MGDG, right? And MGDG is precursor for DGDG. So this gene is induced on my bottom left. You can see it is induced by phosphate deficiency, specifically induced by phosphate deficiency. There is a transcription factor in rice, PHR2. The transcription factor regulates the expression of most of the phosphate-induced genes. So in the mutant of this transcription factor, on my extreme right column, you see the expression is very less. That means the MGD3 needs PHR2 for its expression. And this is just a validation of the same observation. This is a technique which is EMSA, electromobility shift assay. You can detect the DNA-protein interaction. So DNA and protein are interacting. You see the shift in the band. So this is just a confirmation that this transcription factor is actually binding with the promoter of MGD3 and driving its expression. So to understand its role further, we made knockout plants. Somebody was asking what is gene silencing. In gene silencing, you do not completely knock out function, right? Transcript is produced and part of the transcript is degraded. So you still have some function. But in knockout, you completely knock out the gene. There is no protein formation for that. So for that, we use CRISPR-Cas gene editing. And this blue bar is the span sequence where the Cas protein bind, and these are the mutant plants. And this technique is interesting technique because this technique can be used to produce non-GM plants. Plant would be edited, but there won't be any tDNA integration or the foreign DNA in the plant. So it would be completely just like a normal breeded variety. Next slide, please. You also raise overexpression lines. Overexpression lines means that now you are expressing this gene every time, everywhere. You are using a constitutive promoter. And there was a drastic change in the lateral root growth, which is the branches basically, root branches, right? So knockout lines, they had the shorter lateral roots or root branches or less lateral roots, while the overexpression lines, they have more lateral roots or the larger lateral roots. That means the overexpression lines, they have larger surface area for absorption of phosphate. Next slide, please. And as a result, when we tested these lines, knockout lines, they showed poor phosphate use efficiency. So what is phosphate use efficiency? Simply like the mileage of a car, mileage of a bike. 1 liter petrol, how much it is going. In 1 unit of phosphate consumed, how much biomass is produced. This is simply phosphate use efficiency. So this knockout line is showing poor phosphate use efficiency because
The galactolipids which is needed to replace the phospholipid is not synthesized because I have knocked that gene out. On the other hand, the overexpression line showed better phosphate use efficiency. I'll show the data in the next slide, but you take it from me now. The knockout lines, they have the reduced galactolipid levels. Overexpression lines have the more galactolipids level. So more galactolipid is available to replace phospholipid. Next slide, please. This is a complex data. This kind of lipidome profiling nobody is doing in India. We can't do it, so we send all our samples to US. It's really, really expensive, but they give huge amount of data, which is very informative. But the larger picture here is that in knockout lines, they had the less galactolipids accumulation. Because of that, they have the poor phosphate use efficiency. But there was interesting observation that the overexpression lines, they have the higher, the lower phosphatidic acid, and mutant lines, they have the more phosphatidic acid. Phosphatidic acid, I told in the beginning, is a basic phospholipid, but it also got signaling role. It affects the oxygen signaling and thus will architecture in the plant. Next slide, please. Okay, so here's the summary what I have told you so far. So DAG is a precursor for MGD. When MGD3 gene is missing, so MGDG levels are low, DGDG levels are low, and we have the reduced membrane remodeling, and plants show poor phosphate use efficiency. When MGDG is missing, DAG level is more because now the product is missing, the precursor level is more. That results in the synthesis of phosphatidic acid, which blocks the transporter, phosphate transporter and phosphate uptake. Next slide, please. So then we ask next question. So with this much data, we proved that this is also adaptation strategy in rice. So we asked a question. There are large number of rice genotypes. They are tolerant or they are sensitive. So is there any variation in this adaptive response in those varieties? Right? Whether the tolerant varieties are using this response more or sensitive varieties are using this response less. Right. So to understand that, we selected large number of rice genotypes and grouped them into two categories, the tolerant one and sensitive ones. Next slide, please. And then we performed the lipidome profiling of the diverse rice genotypes. What you see in the orange bar is the phospholipid in -P condition, which is less high in the +P condition. But unfortunately, we didn't see any difference between the low phosphate tolerant and sensitive genotype. That means both sensitive and tolerant genotypes, both of them are, this is just a response, adaptive response, but they have not made use of this adaptive response for the differential tolerance to phosphate deficiency. This was really surprising for us. Next slide, please. So we then analyze the individual lipid classes. Lipid classes means MGDG, DGDG2 galactolipids, phosphatidic acid phospholipid, phosphatidylcholine, phosphatidylserine, and several other lipids. Again, we didn't see any difference between the tolerant and sensitive genotype, right? So it appears that our whole analysis is wrong. Something wrong is happening here, or we are not analyzing it properly. Next slide, please. So then we went further dig into our data, and interestingly, what we found that individual lipid species. So what are individual lipid species? You have the two aside chain, and sometimes the carbon chain and the different between the different lipid species, and with the one carbon number difference, you have a different lipid species. What's interesting, we found that the three lipids of DGDG, which is a bilayer forming lipid, it correlates well with the phosphate deficiency tolerance. And one species of MGDG correlates well with the phosphate deficiency tolerance. So sometimes if you scratch your data from the surface, you won't get anything, but if you go down deep into data, then you get answers to your questions. Next slide, please. So here's a summary. So what I've shown you that lipid remodeling under phosphate deficiency is a conserved adaptive response in rice. This is something like saving bank account strategy. You put money when you have it, you take out money when you don't have it, right? So this is the same way plants are using phosphorus and depositing them into the phospholipids. They hydrolyze them when it is needed, and they replace them with the galactolipids. When plants have phosphorus, again they replace galactolipids with the phospholipids. So it's a saving strategy plants are using. Lipid signaling is extremely well understood in animals, but in plants we do not understand much. We need to understand how lipid signaling works. And like phosphatidic acid and also the minor species of MGDG and DGDG, they have this signaling role. So in the last, this is a very attractive strategy which can be used for improving phosphate use efficiency. Next slide, please. So before I end, I must thank people who are working in my lab. I've got a wonderful set of people. They work day and night, and what I've shown you here is not my data. They have produced this data and can show.
I must thank funding. This kind of work needs a lot of money, and I must thank funding from my DB, my IPCR, and grant from my some of my fellowships. Thank you very much. Thank you, Dr. Giri. Excellent. You completed in 18 minutes. I open it for the house. If you have any doubts or any questions. Yes? Sir, thanks so much, sir. My concern is that, sir, is there any training program that you done in about? So, is there any training program at your institute? So that we should like go there and. Currently, we do not have any fixed training program, but soon we are going to launch. We have set up a facility in our institute, which is the HRD facility, and there we are going to through these training programs for gene editing, for metabolome analysis, for NGS as well. So, couple of training programs we are soon going to organize. So, how can we get the information that you have started? So just check our website, institute website, and it will be there. Any more? Yeah. Sir, there was a figure over there showing the blue and purple bands. Sir, that was a transforming state of That's heat map. the heat map. Yeah. So these are pseudo colors. You can put any colors. These colors are simply to distinguish the level of expression. Red means high, blue means less. Sir, for the lipid analysis. Yeah, that was heat map. They were just telling those color does not represent the lipid color. You There can was make no it. solution. You can make it even for correlation. Sir, I just wanted to know whether it was a transcriptomics analysis data or the No. That was lipid these levels. Okay, the rest you can discuss over tea time. Thank you very much, Dr. Giri. Excellent presentation. Our next speaker is Dr. Sanu Arora, JICUK. The topic is unlocking the secret of plant disease resistance. Dr. Sanu, you can hear us? Your voice is not, your voice is muted. We are unable to hear. Or is it the presentation? Is it the presentation? Okay, in presentation. Okay. Please let me know when you would like to start. Yeah, you have 20 minutes. At 20th minute, I'll caution you. Actually, you have 20 minutes and you can start now. I'm trying to. Okay, cool. Thank you so much for inviting me to this conference. I'm glad to present some of my work. I'm Sanu Arora. I'm a group leader at the Joint Center. Joint Center is located in the one town called Norwich. I did my PhD in India before coming here for a postdoc, and then I got a group leader position a few years ago. The focus of my research program is to understand the genetic architecture of plant disease resistance and leveraging this understanding to develop resilient crop varieties in a sustainable way. To give a very simplified overview of the mechanism of plant disease resistance, so when a pathogen attacks the plant cell, plant activates its defense mechanism. The first line of defense is initiated by cell surface receptor, which I've shown here, that recognizes the PAM secreted by the pathogen and triggers the first layer of the immunity. But there are some pathogens that evade the first layer of defense mechanism and release effector molecules into the cell that suppresses the immune system. So plants in turn activate the second layer of defense mechanism where they activate special cells or receptors called intracellular immune receptors that recognize the effector molecules
And these receptors are drawn here in cartoon, which shows three different domains that are present in immune receptors for CC, NBOB, and NLRs. These, when the immune receptors, I will use the short term NLR for these immune receptors throughout my presentation. When they recognize the effector molecules, they initiate the intracellular immunity in the plant cell. Now, I have been working on this specific class of genes called NNRs, or immunity in general, understanding the molecular mechanism of the plant disease resistance in two crops, wheat and pea. So I will present both some of my work on both of these crops. So to start with wheat, wheat is being attacked. It's a very important crop, a very important crop worldwide, especially in India. So this crop is being attacked by multiple diseases, depending on the weather and the location where the crop is grown. There are different diseases that are being attacked. I wouldn't go into explaining the different diseases. I just go into how the technologies that I developed in my research program, how to target finding the resistance against some of these diseases. So for wheat, those who are familiar with wheat has three subgenomes A, B, and E. So a polyploidization event happened where all these subgenomes they combine and make hexaploid wheat. So what I would like to emphasize here, the importance of studying the genetic diversity of wild wheat relatives, the progenitors of wheat compared to directly working on red wheat, because our analysis shows that red wheat passed through a genetic bottleneck during polymerization event. And here I show from my own work, this is actually, I'm talking here about Aegilops strauchii. Aegilops strauchii is the genome progenitor of wheat. So wheat has D and D is contributed by Aegilops strauchii. So we did a genetic analysis of the two distinct lineages of Aegilops strauchii, as you can see here, that wheat forms a very little clade compared to the diversity that we see in the clades of the two lineages of Aegilops strauchii. So the resistance gene, the hypothesis of my work is that resistance genes, they pass through a genetic bottleneck when these events happen. So to bring back the genetic diversity from these wild relatives to traditional approaches is extremely challenging and time consuming. So you have to take them and make them do the trait discovery with markers and then ingress into the wheat plant that you're interested into. So it took a lot number of years just to find or just to clone a single gene. It used to take, but in my research program, I have worked on reducing the timeline for the trait discovery part specifically. You can see that in my cartoon, the number of years now that it used to take for cloning a gene for any trait, that timeline has drastically been reduced, and the marker design from those trait discovery pipeline would also fasten the process of integration. So how I have achieved this, so I will just go give an overview of the method that I've been using. So this method I call it egg and seek, which is the combination of two different techniques called association genetics and resistance gene enrichment sequencing. So here is flowchart of this method. So you have the crop wide diversity panel, and you phenotype the panel with the pathogen, and also at the same time extract the DNA and enrich the DNA for a specific class of genes called NLRs. So if you remember, I talked about NLRs in my first slide when I introduced about the plant immune system. So NLR genes are being involved in the plant defense mechanism. So we generate a bait library and specifically sequence these NLR sequences. So when we have both phenotype and genotype data, we develop a tailor-based GWAS approach, which is different from SNP-based GWAS approach that helps us for this for the cloning of these genes. Now I will give you an overview of what I mean by when I have this thing here. So this part here, can you see my pointer? Yes, ma'am. So this part here, when you have the raw from the raw wheat to actually seed cloning, the pipeline that we implement here, I'll give you
a flavor of how the pipeline works in my next slides. So we take a reference genome. Usually in a SNP-based GWAS approach, what you will have a reference genome, which I've indicated with the gray color line here, and then you have diversity panel with, let's say, in this case, I've marked an RNS. So you have different accession and you have the phenotype, either resistant or susceptible. So then you align all the reads to of all these different accessions to your reference genome, and then you look for the SNP variation, anything that differs from the with respect to reference genome. So, which is in this case, this SNP that I have marked, the C and G with two different colors, it correlates pretty well with the resistant or susceptible phenotype that I have shown with RNS. So basically, in this case, this is a nice correlation of this SNP with your phenotype. But in cases where your reference genome doesn't have the resistant haplotype, so basically it's susceptible and it doesn't carry that may be an insertion deletion, in your reference genome, there's a deletion of the region where you have your gene of interest. So when you try to map the reads wouldn't map. Actually, there wouldn't be any alignment, and then you will not see any signals in your GWAS. So it turns out that there is another way to pin down a SNP for comparison by looking at its context. So rather than mapping to a reference genome, so what we do is we take a subsequence of 50 base pair from every read, which is unlikely to be present at multiple places in the genome, and then we, like in this case, I take a sequence, and then we compare the presence absence of this sequence in different accessions, and this subsequence is called k-mers. So k-mers can have a different size. In this case, we use a k-mer of about 50 base pair, and we store its presence absence. So that's how we store the presence absence of all the k-mers from all the read files and all the accessions and generate k-mer matrix that we use for the GWAS analysis. So this method is a reference unbiased. So you do not have a single reference that we use here. So that's why you are able to capture all the indel and different kinds of radiation that is there. So I implemented this method in Agilostorchide, which is the progenitor, which I introduced earlier. I introduced that Agilostorchide has two lineages, two distinct genetic lineages, L2 and L1. And what we did was I screened the panel. I specifically took the image 2 of Agilostorchide, those lines, and there were about 150 lines that we had in the panel. And phenotype is with 3 different isolates of stem rust. So stem rust is an important disease of wheat. So these 3 boxes here are QC, QP, and cases, QP and cases. So these are 3 different races for stem rust that was used for phenotyping. So after phenotyping, so these were the running through the Cambridge pipeline. This is the plot that we get. So it's like it's a Manhattan plot, and just to be simpler, the red color peak shows you the associated signals. So these are the signals that we see, right? And we have some positive controls here, like SR33 and SR45, and we discovered 2 new genes, which is SR46 and SRP62 in my third plot. So I took one of these genes, and the gene was a standard NLR gene, CC and BARC and NLR domain, and then transferred this gene into a wheat variety called filter, which was susceptible. So what we can see is the lines carrying this gene, single copy transgenic, they were resistant compared to the non-susceptible, they were completely susceptible. That shows you the power of this technique, so we can find the genes quickly, and then in this case, one single gene was sufficient to provide resistance against this pathogen. Now, then after implementing AgRNC, we have implemented AgRNC on multiple diseases in Agilostorchide. So after Agilostorchide, we moved to a peak nitrate collection available at GIC. So it's called Watkins nitrate collection. It presents a snapshot of diversity from pre-industrial foundation era. We collected about 300 codes here in this tree here, and captured the MLR diversity as a similar way as I explained in my paper before.
So we were not sure how would this method work because it's now wheat panel, wheat landrace panel, and it had three genomes. So we were not sure how the interference from the homologous chromosome will work here. So we explored the genetic diversity of this panel against a disease called wheat blast. Wheat blast first emerged through post-germ as a serious disease in Brazil and eventually led to an epidemic throughout South America. So this is in 1980s. Since then, the disease never transferred to other countries, but in 2016, wheat blast epidemic occurred in Bangladesh, posing a threat to the major wheat belts of India, Pakistan, and China. So the panel was phenotyped with isolates of wheat blast at the sibling stage. So with the first isolate, we got a clear peak of chromosome 1b, which led to the discovery of the iconic wheat blast gene called RW3, which was involved in this post-germ. And then we also found another gene on chromosome, again on chromosome 1b, but this is the first called RW4, with a vector that genes was gene DW4. So this work was recently published. So after we found the peak, because we were using NLR diversity, sequence diversity, of course these underlying peaks have NLR genes. So we went into finding what the genes are, and as I have shown here the structure of the genes underlying these peaks here. So it has, again, they were standard NLRs with CCN1 and domains with the gene structure. You can see for both the candidates. So then we decided to screen some homozygous mutants, and we observed clear increase in susceptibility and also found that these mutations co-segregate perfectly with the susceptibility in the progeny. So that was perfect. However, for the killing mutants that we identified for the second candidate, RW4, we didn't observe any increase in susceptibility. So there was something wrong here. So it seems like this wasn't our candidate. So there was something wrong. So then we hypothesized maybe this is actually because this is not an NLR gene that is responsible here. It could be something else. And the piece that we see here is most likely an NLR sitting close to another gene, which is the right candidate. So then we explored the linkage distributor block for this candidate, and we found tandem kinase gene that was sitting very close next to it. And both these genes they share the motor as well. And this gene has also been reported to work for coordinated resistance, and it's a tandem kinase gene. So then we see the mutant of this for this candidate, and we found it. So in this case, it wasn't NLR, it was kinase. So that actually led us to our thinking that maybe we might be missing some genes in the case where the NLR is not in LD with non-NLR candidates. So in this case, we certainly need to go depth in case of finding non-NLR genes underlying resistance rather than just focusing on NLR genes. So then we went back and the panel of angelox tronchi, the 1 to 59 that we did the forensic with NLR sequence, we did the sequencing of the whole panel, and that was made with calculated resistance. So what we observed that after implementing the tailor-based approach for whole genome data, we were able to identify this nice peak for counting review, and also you can see I have also drawn the structure of the gene that we found. So this was not NLR, this was another kinase that was involved in resistance. And we also performed the function of this gene. So that this is an example of another non-NLR type of resistance. In this case, we didn't use NLR data, we used the whole now, this is a very interesting example. So you see very clear looping. So as I say that tailor-based schema is better than SNP-based schema. So we also ran the SNP-based schema using the reference assembly of Roshai that was available at the time. And you can see we do see a peak at the same location, a red color peak. The red color indicates the reference genome is susceptible here. But you can see the size of peak is not as strong as the blue color peak that you have seen in my previous plot.
So what we did was we looked into detail. So we compared the reference genome that was used for SNP keywords, and also we compared it with the resistant haplotype of another assembly that we have. And what we found that the reference haplotype on the x-axis has a 60 base pair deletion, and in the case of resistant assembly, in that deletion there is the presence of this tandem kinase gene that is actually responsible. So what you can see here, the region has a very good alignment between the reference genome and the genome that we created in the lab. But there is a deletion. So the signal that you're seeing here is mainly due to LD of this region, but the actual gene is missing here. So if you would have been using SNP once you make a single reference genome, you would have found a nice piece, and you would have started looking into this region, which has high homology, and you would have landed on a wrong candidate if you wouldn't have used tamer-based divas, or you have used a SNP for SNP with different multiple assemblies. So when we had the whole genome data, that was quite interesting to look into the evolution of the VP genome from Echinopsis. So the phylogenetic analysis, I came back to the phylogenetic analysis tree that I showed you in my second slide. We had two lineages that were also reported before, and then with respect to the distribution for Echinopsis. So what we discovered in our study that we found there were few lines which are always being placed between the two lineages that we have here. And then we found that these are all hybrids of the two lineages. This is actually a separate lineage called tree. We call it lineage tree actually, which has also contributed to the VP genome. So most of the studies done in the past have shown that most of the V genome is contributed by lineage 2 of Echinopsis. So here in this case we have genotypes, all the exceptions of three lineages, and also Salu, you have 2 minutes. Can you hear me? actually what was there any Have 2 minutes more, please. 2 minutes. see the contribution that we made with all the three lineages. What we found out for the first time that apart from lineage 2, there is also the contribution from other lineages. All the genes that we discovered particular traits from Echinopsis, what we found they were all absent in the current version of the gene that we sequenced. So there was unidentified diversity present in the white spot editor that should be brought back by using these techniques. So I will just give you a very brief overview of my resistance research. So I have started a program on resistance. These are very important for making our soil fertile, and they are a good source of vegan protein for human health. So you can see as wheat, where this crop is being also impacted by multiple diseases, and we have a very fantastic collection at John in the center for this species. The pictures tell you the variation in the collection that we have. We have also sequenced this Madam, collection. if you can kindly conclude. We have a mix of. Ma'am, if you can kindly conclude, please, you're up. Yeah. So, so just to show you, this is the beautiful diversity that you see. These are actually the pea lines that we grow in the glass house. Some of them are so called. So I will not go into the detail of what I will conclude here is we are using I'm studying different species of wheat using the similar approaches that I have defined for the wheat research, and maybe I talk about that other time. All I want to say is I want to thank you for all the people. So this is the pea apple. This is my pea group, the PhD students in my lab. And also I would like
behind the people I work for the beach research and the funding community from EBSRC and other funding agencies and my collaborators. Thank you so much. Thank you for the excellent talk, Dr. Sanu. I've been to your lab, but basically for Nicholas there. The discussion is So I open. cannot hear you. Yeah, we can hear you. Do you have any questions for Dr. Arora? Yeah, please. We have one student who has a question. I'm just Yeah. giving it. What is an NLR genes? Sorry, what did you say? Can you repeat What again? is It's very NLR genes? What are NLR genes? NLR genes. So is the question is what are NLR genes? Yes, ma'am. So that's what I explained in my second slide. So NLR genes are also called immune receptors. So when a pathogen attacks the plant activates its immune system. So NLR genes are when the plant attacks, when the pathogen attacks the plant cell, it secretes some effectors, some molecules in the plant cell that activates NLR genes, which are immune receptors. They perceive the signal from these effectors and they wake up. Once they wake up, it activates the downstream intracellular immune signal in the plant to help plant activate its defense mechanism against the pathogen. So these are the genes that perceive the effector molecule, the attack of the pathogen and respond to activate immunity in the cell. Thank you. Any more? Any questions? Thank you, ma'am. बहुत अच्छा. Thank you, Sanu. I think a big round of applause for her. Thank you. Good day. Now I request Dr. Manoj Nazir. Okay. Yes. सामान लेके आइए डॉक्टर Welcome, sir. Welcome. You have 20 minutes at your disposal. Good afternoon to all of you. I'm a man of flowers, though I am a doctorate in genetics and breeding. लेकिन जीन और ब्रीडिंग के साथ मुझे जरा थोड़ा सा प्यार कम ही रह रहा है। ये लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे जीन कोरलिंग एंड जीन स्लाइसिंग, क्योंकि मेरे घर में मेरी जो वाइफ है वो जीन स्लाइसिंग है। So I thought to be away from all this genetics and pointed out how to control my wife's behavior. That was my research on floriculture. I started my floriculture research 1998 में शुरू किया था मैंने. It was on gladiolus. 2008 तक मैं gladiolus अपने घर लाता गया, उनको स्टडी करता गया, लेकिन रोज हमारी धर्मपत्नी को नाराजगी होती थी. अब ये नहीं मालूम था कि what was the reason of quarreling with me. I would go to the market to purchase आलू ठीक नहीं है, अंदर जो है ये काला हुआ है, आपने देखा नहीं है क्या क्या अपने एग्रीकल्चर में आज तक. प्याज की समस्या, मिर्च की समस्या, तेल, कभी कपड़े अच्छे पहनो, आज कहाँ जाना है क्रेविट लगा के, क्या इरादा है. So it was a unique behavior of my wife, and then I started working on it. So what is the reason behind that? 2003 में I got an opportunity to work on one of the flower freesia. I got the freesia to my home, and freesia जब मैंने घर लाया तो धर्मपत्नी जी शांत, and she started offering me coffee. Can you have a coffee with me today? मैंने 10 साल के बाद आप मुझे कॉफी पिला रही है, क्या बात है इसमें? So I studied the effect of freesia and effect of gladiolus on my wife. ये रिसर्च जो है मेरे घर में हुआ है, रिसर्च बाहर नहीं हुआ है. बाद में चला गया. 2020 और 22 में
I put an experiment on different, क्योंकि जो हमारी माँ है, बहन है, ये थोड़ा सा नाजुक होते हैं, इनके इरादे नाजुक होते हैं, इनके थोड़े से सेंटिमेंट्स काफ़ी मुलायम होते हैं, ये एकदम इमोशनल हो जाते हैं, तो इनको फूल देकर कैसे हम इनको खुश कर सकते हैं, that was the concept of my research. So I start with this flower and astrology. Next sir, quick, आगे चलिए. Okay, फ्लोरोपीडिया ये अब शुरू हुआ है, इंडिया में पहले नहीं था फ्लोरोपीडिया. लोग इसमें बिलीव नहीं करते थे, क्या फूल देकर मैं अपनी धर्मपत्नी का प्यार पा सकता हूं या नहीं पा सकता. रोज दे दूं कि नहीं दे दूं? नो. रेड रोज फिल्म बनी थी आज से 30 साल पहले, राजेश खन्ना साहब हीरो थे उसमें, पूनम ढिल्लों हीरोइन उसमें थी, बहुत रोमांटिक फिल्म थी. राजेश खन्ना को खत्म करने के लिए जो विलन लाया गया था वो उसको रेड रोज दिया करता था, और रेड रोज के बाद ही इज लूज द टेम्परामेंट बिकॉज द डोपामिन लेवल सिक्रेशन वाज मोर एक्साइटेड. देयर इज अ डोपामिन हार्मोन, फील गुड हार्मोन in our midbrain, and other is morphine. Two hormones are being released by songs and by flowers. So their secretion of dopamine was excessive, which lose the control of Rajesh Khanna, and he start murdering the girls in the film. ये concept आज से 40 साल पहले आया है. स्टडी किसी ने नहीं किया. I am the first man who studied this concept. अब बताऊंगा आपको. फ्लोरोपीडिया नेक्स्ट ये है एक्वेरियस, जिनका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में हुआ है. आप में कोई राशि इसमें होगा, आप देखिए. चलिए आगे से. ये 3 फ्लावर आपके लिए है, प्रिमरोज, आइरिस एंड वायलेट. यही फ्लावर आप रखना अपने पास, घर में लगाना, या अगर इस राशि का कोई आपका दोस्त है, मदर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, फादर है, सिस्टर है, जो आपसे खपा रहते हैं, ये फूल दीजिए, एकदम उनकी नाराजगी खत्म. आगे चलिए. ये आपका प्रिमरोज है. दिस इज कॉल्ड फरवरी मंथ फ्लावर. जो लोग फेब में पैदा हुए हैं उनको ये फ्लावर ही सूट करता है. There is a scientific reason for it. जब हम पैदा हो जाते हैं, जब when we born, उस समय movement of the stars कौन सी है? This I have talked to my maternal uncle who is a scientist. My wife is now normal. Now she is getting more romantic after freesia flower. अब चाय वाय बनती है, वो कॉफी भी बनती है. अब फिर कॉल में कहता है, अरे मनोज, what is the reason? मैंने this is the reason sir. So they start working on. You can find in the website also. What they are working there NASA में. Dr. K.K. Bhatt, Kumar Krishan Bhatt, and Kashmiri Pandit. Next, violet. ये violet flower आपका है. मार्च का. ध्यान से देखेगा. Next sir, ये है iris. ये flower. Iris is from South Africa. Iris से ही जन्म हुआ है फ्रीशिया का. Iris से ही जन्म हुआ ग्लैडियोलस का. This flower, आगे चलिए. Other flowers for Aquarius is Freesia and Freesia alba. My wife is Aquarian. She is Aquarian. I am Sagittarius. For me, gladiolus was a boon for my research and for my personality and for my promotion after promotion. But it was naughty for my wife, the gladiolus. But Freesia was quite lovely for her. पीछे चलिए आप. Freesia में पीछे, ये Freesia है. अब this is called 7th marriage anniversary flower. 7 साल में इंग्लैंड में ये जो कपल होता है, इनमें दूरी पैदा हो जाती है, ये कूल हो जाते हैं. इनको नजदीक लाने के लिए Freesia flower, इसकी जो फ्रेगनेंस है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, और जो एक्वेरियन में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपस में पॉजिटिव कोरिलेट कर देता है. इसलिए आपस में इनकी दोस्ती रहती है. फ्रीशिया 7th मैरिज एनिवर्सरी फ्लावर. जो मेरे छोटे दोस्त हैं, दोस्तों, जो आज जो शादियां हो रही है ना, वो भी कुछ पंगा हो रहा है. इसलिए 7 साल के बाद, after 7 years of marriage,
get the fresh flower available in the market. ये आप अपनी धर्मपत्नी को दीजिए, उसे कहो कि वो आपको दे दे, आपका प्यार फिर क्लोज. This is done in England, UK. 7th marriage anniversary flower, ताकि वो दोबारा क्लोज आ जाए. Next, orchids. This is dendrobium love making orchids. I was in Shimla, posted there in research station. वहां पर जब मैं था उस मेरी उम्र थी शायद 38. अब मेरी उम्र है 62. मेरे जैसे लोग वहां पर आते थे और चोरी चोरी ये फूल काटते थे. मैंने वहां पूछा डॉक्टर गुप्ता से, मैंने यार क्या व्हाट इज प्रॉब्लम? कहता सर हमें खुद नहीं मालूम है ये क्या हो रहा है यहाँ पर. ये इस उम्र के लोग यहाँ पर आते हैं, फूल काटते हैं और फिर गायब. लव मेकिंग ऑर्नामेंट्स. सो यूर ऑल माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जो मैं कहूंगा आप बुरा नहीं मानिएगा. ये फूल पीछा फेंकने से, लड़की को पीछा फेंकने पीछे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. दिस इज कॉल्ड लव मेकिंग ऑर्किड्स. आई एम सॉरी फॉर दिस, आई कैन नॉट यूज अ वर्ड. क्या करूं, रिसर्च ऐसा ही है. और लड़के को फंसाने के लिए पीछे मारते, फंस गया और 2 घंटे के अंदर वो पीछे चक्कर लगाता था. मैं पकड़ गया. This is called the love-making orchids, and it is found only in Solan hills. सोलन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों में ये फूल पाया जाता है. अब फिर जब धर्मपत्नी जी मेरे से खपा रहती थी, मैं भी जरा जाऊं 2-3 लेके आऊं, और क्या फॉर योर एक्वेरियम सर. जितने भी एक्वेरियम लोग हैं, आप ब्रीशिया, ऑर्किड्स, ब्लू आइरिस फ्लावर को ही अपने पास रखिएगा. नेक्स्ट सर, द स्नोड्रॉप एंड वर्बिना. ये स्नोड्रॉप फ्लावर है, ये वर्बिना फ्लावर है, which are suited for aquarium. Next, this is now zodiac sign Cancer, June 21 से June 22. My birth of my son is 21st of June. Had a love marriage in South India. वो जो लेके आया अपनी महबूबा को घर में, वो सांवली थी, लड़का गोरा, वाइफ को था आधा हार्ट अटैक हो गया. मैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू? ये गोरे को कैसे पटाया इसने? मैं इधर आ जाए. साउथ इंडिया, ही वाज स्टडीइंग इन अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु. वहां पर जो औरतें थे वो पहनते गजरा और फिर आधे यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि वो शक्ल उनकी उतनी हसीन होती नहीं है. ब्लैक ब्यूटी है, कुछ ब्लैक ब्यूटी है, लेकिन कुछ डार्क ब्लैक ब्यूटी है सर. एंड वो गजरा जो पहनती है, उसकी जो महक है, वो जो मर्द है वो पागल हो जाता है. एंड इनके बीच में रोमांस पैदा. मैंने ये इसने गजरा पहन रखा था, जास्मिन फ्लावर. मैं जास्मिन ने तुम्हारे बेटे को मोहित कर दिया, अब तुम जानो तेरी बहू जाने, मैं जा रहा हूं. कल तो पंगा होने वाला है. Now there is settled in Coimbatore. This is the real thing I'm talking about research. What happened? This is the men and women born under the Cancer sign are deeply in with not only their feelings but also the emotions of the people around them. काफी इमोशनल होते हैं, जज्बाती बहुत होते हैं ये लोग. अब इसमें रोज है, रेड रोज जरूर देख लेना मेरे दोस्तों. सी, बिकॉज राजेश खन्ना उस फिल्म में his zodiac sign was Capricorn, not this Cancer. Rose, blue violet. Next, water lily, delphinium flower. ये देखिएगा, ये फ्लावर जो है, this is for Cancer zodiac sign. ये अब कहेंगे आप कि ये क्या मून साइन पर या सन साइन पर है, लेकिन दिस रिसर्च इज कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून. कुछ लोग मून पे चलते हैं, कुछ लोग सन पे चलते हैं, कि जो मेरा मून साइन है, अगर उस पे जाऊं मैं तो देन इट इज डिफरेंट राशि. अब मैं जाता हूं और सन साइन पर, देन इज डिफरेंट राशि. लेकिन जब मैं अपने बर्थ पे जाता हूं तो देन माई राशि इज डिफरेंट. सो दोनों को स्टडी करने के बाद इस पे किताबें लिखी है
available in Amazon, Zodiaca flowers. And उसी का मैं पार्ट आपको दे रहा हूं. This is next sir. This is now Leo. 23 जुलाई से 22 अगस्त तक. ये मेरा राशि है लियो. अगस्त मंथ फ्लावर. ये आपका ग्लैडियोलस है. ये ग्लैडियोलस है और मेरी जो प्रमोशनें होती गई मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को ग्लैडियोलस का स्पेक दिया करता था. फूलों के गुलदस्ते कभी उसको पूछ सर व्हाट इज योर ज़ोडिएक साइन? आई एम कैप्रिकॉर्न. उसी सिस्टमैटिक का फ्लोर लाके इट वाज यूनिफॉर्मिटी ऑफ माय प्रमोशंस इन माय स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उसमें एक राज बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहा. दिस इज नाउ सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड. ये मेरीगोल्ड है एंड सनफ्लावर. यही फूल आप लोगों के लिए ठीक है. आगे लिब्रा 23 सितंबर से 22 अक्टूबर. 23 सितंबर से 22. इनमें रोज अब येलो एंड रेड रोज. लिसन टू मी केयरफुली नाउ. इस साइन के लोग इफ यू आर वेयरिंग येलो साड़ी कीप रेड रोज ऑन पीछे. And if you are wearing red साड़ी, use yellow flower आपके उसमें. और मेल के लिए अगर तुम इस साइन के आदमी हो, आपका ये ज़ोडिएक साइन है, you are wearing some different shirt and different this, you can use your flower as per your choice. क्योंकि इनका रंग का बड़ा इम्पैक्ट है. गुलाब के रंग का बड़ा इम्पैक्ट है. नेहरू और नेहरू was using a red rose only. Yeah. उसका रीजन यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, कभी फोन पे पूछने बताऊंगा. आगे वेरिगो 23 अगस्त सितंबर 22. ये वेरिगो इसका आपका है मॉर्निंग ग्लोरी एंड पॉपी. दिस इज द पॉपी, दिस इज मॉर्निंग ग्लोरी. नेक्स्ट नार्सिस एंड क्रिसैंथेमम. नरगिस एंड क्रिसैंथेमम. नरगिस को फूल इफ यू गो बैक टुवर्ड्स द वन फिल्म राजेंद्र कुमार की फिल्म, उसमें गाना था ए नरगिस मस्ताना बस इतनी शिकायत है, समझा मुझे बेगाना बस इतनी शिकायत है. उसमें जो एक्ट्रेस थी वो घोड़े पे सवार थी, राजेंद्र कुमार साहब पैदल जा रहे थे. सर इन फिल्मों का इन्फ्लुएंस मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे सर वो दे वेयर डायनेमिक पीपल. उन्होंने स्टडी करके ही वो शूटिंग की गाने की. एंड नरगिस मस्ताना, उसको नरगिस का फूल दे रहा है, उसको फंसाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज शी बिलोंग टू दिस ज़ोडिएक साइन. ही गिव्स हर नार्सिस. दो है ये, डेफोडिल एंड नार्सिस. नार्सिस को काट के उसका पानी का ड्रॉप अगर आप पानी में डालोगे, उसका जो ड्रॉप ऊज निकलता है उसको पानी में डाल के पियोगे, इट्स अ पॉइजन, इंस्टेंट डेथ. एंड डेफोडिल उसका ऊजिंग जब आता है स्टेम से, उससे डेथ नहीं होता है, लेकिन नार्सिस से डेथ होता है. सो नार्सिस फ्लावर को ध्यान से देखना पड़ता है. ये नरगिस का फूल है, नरगिस एंड नरगिस मस्ताना. नेक्स्ट then April birth flower is 21st March, 20th April, Aries. Daisy is the birth flower for those born in April. This flower symbolizes purity, new beginning and true love. आगे सर, ये डेजी फ्लावर है उनके लिए जो इस राशि से बिलोंग करते हैं. It affects their personality, gives them a soothing effect, gives them love and affection, gives them everything what they want. Because the chemical composition जो इस फ्लावर की fragrance है और जो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ वो मैच प्राप्त करता है. एलर्जी बाकी फ्लावर से एलर्जी होती है. Somebody are allergical to egg, some are allergical to nolkol, some are allergic to rice. So doctor says avoid rice, doctor says avoid egg, doctor says avoid cheese. So we say avoid rose for this zodiac sign. Next, the name Daisy actually comes from an old English term that translates to day eye. Daisy symbolizes new beginning. The flowers are a symbol of hope and remind most powerful tools we have to manifest better. बहुत अच्छी राशि है. लोग ये अपने बातों से ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, पकड़ लेती हैं उनको अपने बातों से. आगे से डेजी फ्लावर. नेक्स्ट एप्पल बर्थ ही तो हो गया था. आगे चलिए. हाँ ओके, ये पिंक डेजी है.
Then comes Taurus, 20 अप्रैल से 19 मई तक. Taurus, beginning, being an earth sign, flowers are perfect for Taurus. The zodiac flowers for Taurus are rose, poppy, foxglove, and daisy. Next, this is poppy flower, this is daisy flower, this is foxglove. Foxglove, ध्यान से देखिए. Next is rose, and why foxglove? The meaning of this flower is twofold. पीछे चलिए. Both positive and negative. Foxglove can be associated with insincerity, but it also magic, intuition, and creativity. And Taurus enjoys artistry and being creative. Foxglove is a perfect flower for them. Foxglove is meant for both positive and negative side. Okay, next. That's now Pisces, 19 फरवरी से 20 मार्च तक. Flowers that influence the zodiac sign. Pisces में water lily. आगे ये वेट कीजिए, इवनिंग primrose. आगे mugwort. This mugwort. Then iris. Then zodiac sign Scorpio, 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक. आगे चलिए सर. This is now zodiac sign. This is geranium flower. ये geranium flower इनके लिए बहुत suitable होता है. आगे marigold. Then peony flower. Peony flower इन लोगों को अपने घर में गमले में रखना चाहिए. आगे this is peony, chrysanthemum, and amaranthus. That is sir. Thank you very much. If you have any question later on, I will guide. सर हमने तो रंगों का फूलों के बारे में सुना है. आपने खुशबू का अल्फाज यहाँ सभा में बना दिया. Anyone has any questions? डॉक्टर साहब के लिए किसी के पास कोई क्वेश्चन है क्या? क्यों बच्चों? See, many a time we fail to understand. When I've been to University of Western Australia, sleep, I'm not speaking of anything. Sleep fair, there is a whole research building as big as yours, whole college. This is a new field of study. There is a lot of science. आप लोगों के लिए खुश रहें, उन्होंने कॉमन शब्दों में यूज किया. It's a huge amount of science that is going on natural dopamines and the colors and the flowers aroma that it has. So if you have any questions, please do ask. Yeah, please. Sir, is there any flower for PhD scholars? Yeah. For studies, yes. So what is the name of that flower? Huh? What is the name of that flower? That is, it depends on your Rashi. Rashi कौन सी आपकी? Sir, I born in August. हाँ? तो आपको ग्रेजुएट साहब के लिए अच्छा है. शुक्र के साथ में अपने गाइड को दीजिए, अपने आप साइन कर लेगा. सवाल Excuse me, sir. Sir, for Capricorns. For every question, we'll be charging 100 rupees. I will take the charge. You take this PowerPoint. Yes, madam. You go to Amazon. Amazon में क्लिक करके ये किताब, उसमें आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है. डाउनलोड इट. किस नाम से सर? किस नाम से बुक? Zodiac Flowers. नोट कर by मनोज नागी. अभी you can open it. मैडम को भी एक सवाल एक है. किताब है पर्सनैलिटी एंड फ्लावर्स, जिसमें मैंने लिखा डोपामिन का क्या काम होता है. फील गुड हार्मोन. फील गुड हार्मोन डोपामिन. When you will see, I have almost 75 WhatsApp groups. उनको सुबह गाना और कुमार ये कुमार में राइट आपको सब मिलता है सुबह एक फूल. I send them flowers and song. दोनों का काम है डोपामिन feel good hormone, release of dopamine secretion slowly, and they become happy. That's why is smiling. You can see what you can see on the group. Ritu has a question for you, sir. एक गाना देखो आता है अलावा इसके अलावा कोई बात नहीं होती है. अलावा This is totally based on research. Sir, number second. I will see dopamine level का secretion फूल को देखने से मिलता है, गाना सुनने से वो रिलीज होता है.
अगर हम गाना सुनेंगे 72 beats per minute, and I will come to you. If it is more than 72 beats per minute, then there will be more release of dopamine, and you become harsh. You become out of control. आपके नर्व जो है they become neurons become uncontrolled. जो घोड़ा जब दौड़ता है ना वो बिना लगाम के ऐसे हो जाता है. So this is one question जिसमें काम किया मैंने. Second question काम किया मैंने कि ये जो जोरेक्साइन सेगिटेरिस है, जब ये पैदा हुआ है उस समय स्टार्स की मूवमेंट क्या होती है और उनका इफेक्ट, उन स्टार्स का इफेक्ट उनके मियोसिस पर क्या होता है. जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर जब होता है सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर, मल्टीपल क्रॉस ओवर, जब वो क्रॉस होता है तो जीन्स का रेप्लिकेशन कैसे होता है. वो जीन्स का रेप्लिकेशन, जो जीन्स आपके बॉडी में आ गई, क्या वो उस रोज को, जो रोज में फ्रेगनेंस है, जो रोज में केमिकल है, फ्रेगनेंस में तो केमिकल है, क्या वो केमिकल आपको एक्सेप्ट करता नहीं करता. सो दैट इज व्हाई अ पर्टिकुलर जोरेक्साइन हैज अ पर्टिकुलर फ्लावर. तुमको लोटस का फ्लावर ही चाहिए. गुलाब लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, गुलाब दोगे तो प्रॉब्लम होनी. Better we can ask her. किसको? सेरोटोनिन. तो दैट इज एनी फ्लावर कैन इंक्रीज सेरोटोनिन. सी व्हाट इज फ्लावर और गाने से आपके सेरोटोनिन एंड डोपामिन एंड मॉर्फिन इंक्रीज होता है. मॉर्फिन इज द पेन किलर, एनर्जेटिक, जो आपको पेन को कम करता है. जब मैं रिसर्च करता था तो मैं 2 साल गया हॉस्पिटल, सर्जरी वार्ड में. मैं रोज उनको फूल देता था तो मुझको बोल गया पागल आया कि नहीं, अभी नहीं आया. फूल दे दिया, अभी नहीं दे दिया. मैं उनको फूल दे रहा था ताकि उनकी मॉर्फिन, जो उनका सेरोटोनिन एंड मॉर्फिन एंड डोपामिन रिलीज हो जाए. मॉर्फिन से उनका पेन कम होता था. इन पेशेंट्स को डॉक्टर सीडी गुप्ता को मॉर्फिन इंजेक्शन देने की आवश्यकता पड़ी नहीं. 2 साल के बाद जब मैं निकल गया रिसर्च करके तो सीडी गुप्ता के हाथ कांपने शुरू हो गए ऑपरेशन से पहले, क्योंकि उसको पहले फूल मिलता था, उसका डोपामिन फील गुड हार्मोन होता था. अब वो बंद हो गया, हाथ कांपने लगे. अरे वो पागल कहाँ गया, क्या वो आया नहीं. अब पागल दूसरे दिन आ गया, टाइप कोट पहन के, हैट लगा के, उसका सेंट लगा के. अरे ये पागल है वो. अरे सर मैं आई वाज डूइंग रिसर्च. Better we can ask. See, when you are good, when you are feeling good, am I right? You can do good work. अब किसान को अगर हम अच्छा गाना सुनाएंगे खेत में, जो मनोज कुमार ने दिखाया था उपकार में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मोती, उससे क्या हुआ किसान को? खुश हो गया. खुश क्यों हो गया? रिलीज ऑफ डोपामिन. डोपामिन कैसे रिलीज हो गया? फील गुड हार्मोन इज डोपामिन. रिलीज ऑफ डोपामिन रिस्पांसिबल by music and by flowers. So when they release your dopamine level to a good amount, so you feel good, you study good, you work good. तुम भी खुश, आपके माता पिता भी खुश. जब शादी करेगा तब मुझको फोन करना, बताऊंगा कौन सा. Thank you. Now we have another topic. It is organic farming and natural farming system, challenges and perspectives. And to speak on it, we have Rajveer Singh from RPSC Beachpur, Agra. Sir, your time starts. I request you to kindly limit to 20. Thank you very much, sir. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. जैसा कि अभी नाजिर सर का जो लेक्चर हुआ वो अपने में एक वंडरफुल लेक्चर है. हम लोग इतना जीन म्यूटेशन और तमाम जो लेक्चर चल रहे थे तो उसमें सर ने एक विद्यार्थियों में और सभी ऑडियंस में एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छा फीलिंग डेवलप हुआ है. उसके लिए मैं सर को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. और जैसा कि ये आज का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग systems, challenges and opportunities. Time कम है. Challenges, current challenges in agriculture. जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, degradation of natural resources.
लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल बायोडाइवर्सिटी का जो लगातार फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज हो रहे हैं, ये भी एक मॉडर्न एग्रीकल्चर की एक अपने में एक समस्या है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएशन इस समय हो रहा है इन द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग सिनेरियो वर्ल्ड वाइड. Second one is input intensive rising application of chemical fertilizers, pesticides, insecticides. इसकी वजह से जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड, वाटर एंड इकोसिस्टम एज ए होल. And third one is consequently a large number of farmers falling into the debit trap and disturbs in farming sector became pervasive. फार्मर्स के सामने भी एक समस्या है, जो खेती है वो लगातार उसका जो आउटपुट है वो घटता हुआ चला जा रहा है, इनपुट बढ़ रहा है. तो ऐसी समस्याओं से जो इस समय इमर्जिंग जो इश्यूज हैं, इन सब का सॉल्यूशन हमें जो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना है. जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, origin and concept of one straw revolution. ये नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्राकृतिक खेती का इस समय पूरे देश में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है, तो उसके जो फाउंडर हैं वो फुकुओका फार्मिंग, जो जापानीज एक फार्मर थे, तो उन्होंने ये फिलॉसफी को डेवलप किया, नेचुरल फार्मिंग. नेक्स्ट प्लीज. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, और इन्होंने बुक लिखा वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, यानी नेचुरल फार्मिंग इज नॉट जस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बट इट इज फॉर द कल्टीवेशन एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. यानी ये खेती ही नहीं है, बल्कि यह एक आम ह्यूमन बीइंग्स के लिए लाइफ को बचाने के लिए इसका एक अपना एक महत्व है. प्रिंसिपल्स ऑफ फुकुओका नेचुरल फार्मिंग rejected the use of modern technology, and after 25 years his farm demonstrated consistently comparable yields to that of the most technologies. तो उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट लगातार कर रहे थे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को से हटके जो है नेचुरल वे में जो है सॉइल एक लाइव मीडिया है, जीवित है, और सॉइल और इकोसिस्टम सबको हेल्दी किस तरह से रखा जाए, तो ये सब एस्पेक्ट्स को लेकर उन्होंने इस पर काम किया, जिसको आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज. उसी का एक पार्ट है पर्माकल्चर. पर्माकल्चर इंटीग्रेट्स लैंड रिसोर्सेज, पीपल एंड द एनवायरमेंट थ्रू म्यूचुअली बेनिफिशियल synergies, imitating the no waste closed loop system seen in diverse natural system. Permaculture studies and applies holistic solutions, यानी जो भी हमारा नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको हमें हेल्दी रखना है, इसके पीछे ये फिलॉसफी काम करती है. जैसा डायग्राम से आप देख रहे हैं कि जितना भी एनिमल्स है और सॉइल है, प्लांट पॉपुलेशन है, इन सबको जो है हमें हेल्दी रखना है. तो ये कॉन्सेप्ट जो है पर्माकल्चर के रूप में है. नेक्स्ट प्लीज. बिल मॉलिशन, ही इज द फादर ऑफ पर्माकल्चर. इन्होंने इसको कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप किया था, और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं अर्थ केयर, फेयर शेयर एंड पीपल केयर. नेक्स्ट प्लीज. ये पर्माकल्चर का जो एक डायग्राम के उससे आप देख रहे हैं, फूड, सॉइल, शेल्टर, एथिक्स, एनर्जी, क्लाइमेट एंड वाटर, इन सबको जो है हमें सस्टेन करना है. नेक्स्ट प्लीज. बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर. बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर इज ए form of alternative agriculture very similar to organic farming, but it includes
various esoteric concepts drawn from the ideas of Rudolf Steiner, initially developed in 1924. तो इन्होंने भी जो है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट जो है दिया हुआ था। नेक्स्ट प्लीज। ये बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का वर्ल्ड वाइड वो दिया हुआ है। एज ऑफ 2020 बायोडायनेमिक टेक्निक्स वर यूज्ड ऑन इतने हेक्टर्स ऑफ लैंड इन 55 कंट्रीज led by Germany, Australia and France. This is the concept of organic farming. Definition as per USDA. Organic farming is a system which avoids or largely excludes the use of synthetic inputs such as fertilizer, pesticides, hormones, feed additives, etc. and to maximum extent feasible really upon the crop rotation, crop residues, animal manures, of farm organic wastes, mineral grade rock phosphate additives and biological system of nutrient mobilization and plant protection. तो ये भी एक जैविक खेती का ये है, इसमें टोटली केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रोथ हार्मोन्स या जितने भी सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स हैं उनका टोटली जो है हमें उनको बाहर रखना है। दिस इज द वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो कि लगातार ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 187 कंट्रीज में 72.3 मिलियन हेक्टर्स पर इस समय खेती हो रही है ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वर मैनेज्ड organically by at least 3.1 million farmers, with the most organic agriculture land in Australia 35.69 million hectare, followed by Argentina and Spain. यानी ऑस्ट्रेलिया जो है पूरे विश्व में ऑर्गेनिक खेती में फर्स्ट पोजीशन पे है और अर्जेंटीना एंड स्पेन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है। Next, please. The number of organic producers increasing worldwide. In 2019, 3.1 million organic producers were reported. यानी पूरे विश्व में 3.1 मिलियन जो फार्मर्स हैं वो रिपोर्टेड हैं। India contributes to the country with the highest number of producers. 13,66,000, followed by Uganda and Ethiopia. Most small scale producers are certified in group based on an internal control system FIVL survey 2021. Status of organic farming in India. During COVID-19 pandemic has changed the perception of organic foods, with the spotlight now on safety and healthy food that is nutritious to build a strong immune system. जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं जो कोरोना काल का जो हुआ तो उससे फूड हैबिट्स पर भी ध्यान ज्यादा दिया जाने लगा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है और इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए आप सभी जानते हैं ये जो वर्ष चल रहा है 2023 अंतरराष्ट्रीय कोर्स मिलेट्स ईयर के रूप में इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसका मेन पर्पस यही है कि खास तौर से जो बाजरा है, बाजरा का 70% प्रोडक्शन अपने देश में है, पूरे विश्व के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। Present scenario of organic farming in India. Organic farming is an advanced stage in India. About 2.66 million hectare of farmland was under organic cultivation. 0.73 million hectare under permanent guarantee system certification. 4.7% of global area under organic farming. यानी पूरे विश्व का हमारे पास 4.7% जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने कंट्री में है और 2.4% ऑफ
नेट कल्टीवेटेड एरिया इन इंडिया, जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है 139 मिलियन हेक्टर का, 2.4% एरिया ऑर्गेनिक खेती में कन्वर्ट हो चुका है। 4% ऑफ नेट कल्टीवेटेड एरिया बाई मार्च 2026 तक का एस्टिमेट दिया हुआ है कि जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है उसका 4% एरिया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस समय अगर हम कंट्री की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो ऑर्गेनिक खेती में फर्स्ट पोजीशन पे है। वहां पर 0.76 बिलियन हेक्टर ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, दैट इज ओवर 27% ऑफ इंडिया टोटल ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। यानी भारत का जो टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसका 27% प्रोडक्शन मध्य प्रदेश से आ रहा है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड वन इज मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर अबाउट हाफ द एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों स्टेट पूरे कंट्री का जो टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसका लगभग 50% प्रोडक्शन इन स्टेट से आता है। और 2003 और 4 के अगर हम देखें कंपैरिजन में तो 45 गुना जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन देश में बढ़ गया 2003 और 4 से अगर देखते हैं। और लास्ट 6 ईयर एनुअल ग्रोथ रेट इज 22%। एक्सपोर्ट जो है वो 1041 मिलियन डॉलर के हिसाब से है। ये नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन एरा के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो मॉडर्न एग्रीकल्चर से जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है और पूरा का पूरा सिस्टम, लैंड, वाटर, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ, इन सबको हमें हेल्दी रखना है। तो उसके लिए हमें कहीं न कहीं इन चीज़ों पर जाना पड़ेगा और ये आगे आने वाले समय के लिए हमें, क्योंकि इसको हमें अपने प्लेनेट को बचाना है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना है, ये सबसे बड़ा एम्फेसिस है। नेक्स्ट प्लीज। नेचुरल फार्मिंग इन ए नटसेल, नेचुरल फार्मिंग इज अबाउट एलिमिनेटिंग केमिकल टॉक्सिन्स फ्रॉम द सॉइल and to create a healthy ecosystem for crop production. Or natural farming is also about adopting principles of nature. प्रकृति के सिद्धांतों को हम अपनाएं and farming using free locally available ingredient and not using any commercially sold ingredient. यानी घर के जो डोमेस्टिक जो भी उत्पाद हैं उनको हमें आगे लेकर बढ़ना है, बाहर से हमें कोई भी चीज नहीं लाना है। नेचुरल फार्मिंग इन ए नटसेल इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टेक्निक्स कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट प्लीज। ये वेरिएंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग है, जैसा मैं अभी पहले बता रहा था आपको, पर्माकल्चर, बायोडायनेमिक फार्मिंग, ऋषि कृषि, नेक्स्ट प्लीज, पंचगव्य, नाटो इको फार्मिंग, बैक नाटो इको कल्चर एंड अग्निहोत्र, जिसे हम होमा फार्मिंग भी कहते हैं। ये सब पूरा का पूरा ये नेचुरल फार्मिंग के वेरिएंट है, सिस्टम्स हैं। पर्माकल्चर हुआ, पंचगव्य, नाटो इको, अग्निहोत्रा, जिसे होमा फार्मिंग भी कहते हैं। तो ये सभी जो है हमारा नेचुरल फार्मिंग को बूस्टअप करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस में इस तरफ से चल रहा है, वही मैंने पूरा दिया हुआ है। समय कम है, स्लाइड ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ा मुझे फास्ट चलना पड़ता। नेक्स्ट प्लीज। 4 व्हील्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो आप देख रहे हैं, जीवामृत, जो सॉइल बायोटा, सॉइल के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा एंड फोना, फोना और ये अर्थवॉर्म और बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीट्स,
इन सब की जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, जिसे सॉइल बायोटा बोलते हैं, उसको कहीं न कहीं हमें इनरिच करना है, जो कि आज बहुत डेंजरस पोजीशन में है। ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर इस समय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की लैंड्स में बहुत कम है। 0.3 हमारा विजुअली कंडीशन में देखते हैं हम 0.28%, क्योंकि होना चाहिए 0.8। तो उसको हेल्दी रखने के लिए जीवामृत, इसी तरह से अक्षांगा और बापसा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये उसका प्रिपरेशन दिया हुआ है, ये आजकल सब बड़ा कॉमन हो गया है, जीवामृत। और ये सब पूरा गाय का गोबर, 200 लीटर पानी, 10 केजी काव डंग, 1 केजी लेंटिल पाउडर जिसे बेसन बोलते हैं, 1 केजी गुड़ और 5 लीटर काव यूरिन, इन सबको मिलाकर हमें जो है सॉइल में करना है। तो वो इसका पूरा प्रिपरेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। ये बीजामृत का है, शास्त्रों में भी कहा गया है, जिस तरह से हम लोगों के संस्कार हैं, पाणिक ग्रहण संस्कार जैसा भी सर बता रहे थे, शादी और उसके बाद जो झगड़े हो रहे हैं, तो इसी तरह से बीज संस्कार, सीड ट्रीटमेंट, जिसे बीज संस्कार बोला गया है। इसके बाद भूमि संस्कार, भूमि मिट्टी को किस तरह से हमें एनरिच करना है, हेल्दी करना है। और तीसरा संस्कार है पादप संस्कार, प्लांट प्रोटेक्शन। और उसके लिए आग्नेयास्त्र, नीम बेस्ड जो हमारे बायो पेस्टिसाइड हैं, बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट हैं, तो उनको लेते हुए हमें ये तीनों संस्कार हैं, भूमि संस्कार, बीज संस्कार और पादप संस्कार, यही सब प्रिपरेशन इसमें दिया गया है। आगे करिए। ये जीवामृत किस तरह से है, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, सॉफ्ट कॉपी यहाँ रहेगी। इसको आप स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, क्योंकि आपके सेकंड सेमेस्टर में 5th डीन्स कमेटी का जो सिलेबस है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक आपका पेपर दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा कंटेंट्स कहीं न कहीं आप सबके यूज में आएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और इवन MSc इन एग्रोनॉमी, वहाँ पर भी पेपर है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का। तो ICR ने अब कोर्स में भी इसको ऐड कर दिया है। सर, एप्लीकेशन ऑफ जीवामृत, मल्चिंग, ये देख सकते हैं आप, प्रिपरेशन मल्चिंग, ये मल्चिंग के रूप दिया हुआ है, सॉइल मल्च, स्ट्रो मल्च, लाइव मल्च। नेक्स्ट, वापसा, ये जो मॉइस्चर, फरो इरिगेशन से माइक्रो क्लाइमेट जो चेंज होती है पानी का, ये इसको आप देख सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग से इंटीग्रेट बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये सब दिया है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, सिल्वी पास्चर, ट्री इंटरक्रॉपिंग, और ये सब पूरा बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट प्लीज। ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस नेचुरल फार्मिंग, इसको भी जो है दोनों कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट करने का काम इसमें किया गया है। और क्योंकि सर ने अभी मुझे मात्र 2 मिनट का समय अलार्मिंग कर दिया है, तो इसलिए मुझे बहुत फास्ट करना है। यील्ड ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम कन्वेंशनल टू ऑर्गेनिकली बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि इनिशियली 4 to 5 years यील्ड पेनल्टी, जो अभी मॉडर्न तरीके से जो खेती कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे, तो स्टार्टिंग में जो है वो यील्ड में थोड़ा सा कहीं न कहीं डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड एफर्ट्स को लागू करें, एक साथ ऑर्गेनिक उस पर ना आए, बल्कि इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, यानी द फिलॉसफी ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो करना है। नेक्स्ट प्लीज, आगे बढ़ाइए। और ये तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग, तीनों के कंपोनेंट्स हैं और तीनों को डिफरेंशिएट किया गया है अलग अलग पॉइंट्स को लेते हुए। नेक्स्ट,
ये सब उसका दिया है, इंडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क माइक्रो ऑर्गेनिक विद प्लांट्स, ये भी सॉइल हेल्थ से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ कवर क्रॉप्स, क्रॉप रेजिड्यू, जो कोई नई चीज नहीं है, सभी इन चीजों को देख रहे हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी इन सॉइल एंड काउ डंग। नेक्स्ट, बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ओके सर, नेक्स्ट चैलेंजेस दिखाइए, आगे बढ़िए। पेस्ट कंट्रोल सॉल्यूशंस, नेक्स्ट एग्रो इको, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, आगे बढ़ाएं। और कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, ऑर्गेनिक, नेक्स्ट बैक करिए। Organic and natural farming practices should be seen as one of the alternative options for the producers and the consumers for chemical-free produce. Organic farming and natural farming produce be recognized as natural product and may be encouraged through cluster farming to have better traceability of the produce. Scientific evidences need to be generated before scaling out in different agroclimatic regions with different crop combinations for its long-term sustainability. Next. Thank you very much. समय कम था और ये बहुत वाइड वो है, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट को लेके जो माइंडसेट में अभी बहुत सारी चीजें हैं कि नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, पर्माकल्चर भी हो रहा है, तो सारे कॉन्सेप्ट को कंसाइज करते हुए तो अल्टीमेटली जो एक बेसिक फिलॉसफी है वो ये है टू यूज ग्रीन टेक्नोलॉजी टू सेव द प्लैनेट, सॉइल, वाटर एंड इकोसिस्टम एज ए होल, हमें उसको सस्टेन कर। दिस इज द philosophy behind the organic and natural farming. Any questions? We will close the question section because we have the other sessions going on. It's really a difficult gala topic because we had those from lipid modeling to that of unraveling of NLR genes, to the fragrance of flowers and genetic science, to that of the emerging, re-emerging, which was an old thing which India followed and we are coming back to organic farming. Do you have anything, Dr. Amit? So I give back to organizers. Thank you, Rajveer sir, for this nice session and talk. Now, we all have to move for tea session and poster presentation session. Yes, sir.